अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शेख मोहम्मद अली हियर, आपका होस्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं साकिब साहब से और आप सब से अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा। इट टेक्स अ मैन टू स्टैंड अप टू हिज़ मिस्टेक्स। आप सबको पता है, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते, वो आज जान जाएँगे इस हवाले से कि वक़्त की कदर करना अपनी भी और दूसरों की भी बहुत ज़रूरी है। और आज अनफॉर्चुनेटली एक छोटा-सा अजीब-सा एपिसोड आया मेरी लाइफ़ में, और जो इनेविटेबल था, और वो ये था कि आई हैड टू गो टू अ पर्टिकुलर साइट इन हियर इन इस्लामाबाद, B17 इट्स कॉल्ड, and I was supposed to be there by 4 and I was supposed to be back by 5. बट वहाँ एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक उलट गया है, और जिसकी वजह से इट्स नाइटमेयर। तो अल्लाह का शुक्र है कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मोटरवे, और हमें ऑल द वे वापसी पे जाना पड़ा वाह, और वहाँ से ब्राह्मा 72 से मोटरवे कैच करके, और नाउ आई एम बैक। So almost an hour I'm late, and I'm deeply apologetic. I'm sincerely apologetic to all of you and to Saqib Saab also. And without wasting much time, ये सिलसिला शुरू करते हैं। Saqib Saab is known to me through the internet, which is a very interesting scenario. Saqib is managing the digital transformation in finance for a well-known company called Jazz, which was earlier called Mobilink. He's a young gentleman, as well as successfully implementing robots for the most agile processes with the technical help of IBM. He was among the top 3 employees who were granted a fund of Pak rupees 2 million to execute his dream project at Jazz, which is still under progress. The competition was open for 3,000 employees, and a total of 80 applicants participated. एंड माशाल्लाह साकिब इज़ वन ऑफ देम जिनको ये प्रोजेक्ट मिला और जिसको लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। ही इज़ अ बिजनेस ग्रेजुएट ऑफ कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, which majors in marketing. Currently, he is pursuing Leaders of Learning program from Harvard Extension School, which will hopefully, inshallah, end in September 2020. Saqib is a young mentor, a public speaker, and an entry-level coach. इससे कि आगे की जो दास्तान है वो क्यों ना हम साकिब से खुद ही सुने। तो साकिब, वेरी वार्म वेलकम, माय सिंसियर अपॉलजीज फॉर बीइंग लेट, एंड द फ्लोर इज ऑल योर्स जनाब। Walaikum assalam. Thank you so much for this wonderful opportunity first of all, and no need to apologize. आपने मुझे बहुत timely बता दिया था, और accidents happen. This is all about this platform. We talk about failures and we learn from them. So my purpose here today is कि मैं आप लोगों को encourage करूं कि failures से कैसे सीखा जा सकता है। Failures हकीकत हैं, they are real. आप बाहर निकलें, आप घर में रहें, इवन आप सोशली बाइकआउट कर दें, आई गारंटी यू आप अकेले भी हुए तो फेलियर आपके पास आएगा। दे आर इनएविटेबल इन देयर नेचर, हर इंसान के साथ होते हैं, बट थ्रू लर्निंग, through story sharing, we can minimize the consequences. That is why I have entered into this field, entry level coaching. 12 फेलियर मेरी सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुजरी। मेरी तालीम और मेरी इसके बाद जॉब्स जितनी हैं, एक दो को छोड़ के, वो इस्लामाबाद से ही हैं। इसकी वजह ये नहीं कि मुझे बाहर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ये मेरी शहर से मोहब्बत है। Till FSC, I wasn't clear about life, like many youngsters are not. वो समझते हैं सिस्टम में चलता रहेगा and eventually we will end up somewhere better. ऐसा होता नहीं। तो FSC के बाद एक ड्रीम देखा कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, और कॉर्पोरेट में मुझे सेल्स के अंदर अपने करियर को बनाना है। 7 साल तक मैं इस ड्रीम को लेके चलता रहा। मेरी एजुकेशन 4 साल की इस नज़र हो गई, प्लस मेरा पहला 3 साल का जो एक्सपीरियंस था वो एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ था जो टेक्नोलॉजी सेल करता था, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। 3 साल तक प्रोसेसेस को समझा, इससे पहले कि मैं अपनी ड्रीम को जब अचीव करूं तो मैं उसके लिए इक्विप हूं। कैन यू बिलीव 7 साल के इस ड्रीम को मैंने 3 माह में छोड़ दिया। मेरे पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आ गई, बट फॉर मी इट वाज अ फेलियर। वो चीज़ जिसको 7 साल में लेके अपने साथ चलता रहा, हर लम्हा उसकी परवरिश करता रहा, वो मैंने 3 महीने में क्यों छोड़ी। इसमें कुछ आप लोगों को रीजंस दूंगा
कि इससे जो मैंने फेलियर से सीखा वो क्या. There were some qualitative aspects and there were some quantitative aspects. I was initially blinded by the qualitative aspects, the lifestyle, the money factor, the perks कि आपके पास गाड़ी होती है, you have a large team to manage. लेकिन मैंने qualitative जो चीजें थी उन पे नहीं सोचा, about culture, about the way forward for growth, because you are obviously, when you grow, your company grow, so it is a collective two-way process, right? So मैंने ये सीखा कि नेक्स्ट जो मेरा गोल होगा, विजन होगा, उसमें मैं इन दोनों का बैलेंस लेके चलूंगा. मैं अपने डिसीजन को एक चीज पे बेस नहीं करूंगा. By the way, when I get my dream, I was working for one of the leading company and I was their territory sales officer for Peshawar. I'm not blaming the company for that. They had their culture and I still respect that. It was I who couldn't fit in. It is my personal failure that I couldn't fit in. And they also accepted my resignation without any guilt and also promised that I can join at a later stage when I'm fit to join the organization. But I had another opportunity in hand, so I switched. Now, जैसा कि मैंने बताया कि आपने अपने फेलियर के कॉन्सिक्वेंस को मिनिमाइज करना होता है. जब हम करियर की बात करते हैं तो हम बेसिकली अर्निंग की बात करते हैं, एक फैमिली को सपोर्ट की बात करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस को सपोर्ट करने की बात करते हैं, राइट? करियर इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग लाइक अ मशीन, राइट? सो यू टेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली. अब मैंने सोचा कि मेरे जो ये 3 चैलेंजेस हैं, लाइक आई हैव टू अर्न रिस्पेक्टेबल मनी, I have to make my position in the society, and yes, being a beta, I have to make my parents proud somewhere in my life. Okay, if I'm not a doctor and not an engineer, that doesn't stop my life there. I have to be a respectable person. So then I started studying different organizations, and I ended up with a conclusion that I have to join the #1 telco company. I'm talking about 2013, 3 years after my initial job. So I started planning for the telco industry. But this time, I was very clear that what domain I will be joining. It was procurement, the counterpart of sales. I already had the experience of sales. I knew how processes work for procurement. This was the mistake I made last time. I didn't calculate it the way. I didn't got myself okay with the processes of the FMCG. I just jumped in and I went out. But this time I was clear to go with full preparation. So I skilled up myself with all the basic knowledge of telcos, basic process of procurement, and skills required for procurement. It's not an ordinary job. You have to negotiate in millions on everyday basis. And qualitative aspects, like what sort of culture I need to flourish. For me, if I fail materially, it is acceptable. If I lose money, if I lose a car, if I lose a home, because I have this confidence that I'll get it back. But I don't want to lose my values as well. As a Pakistani, as a Muslim, as a community member, I certainly have some values to follow. And if a certain corporate's value are contradicting with those values, then I have to respect those values, but I have to quit because they are contradicting with my values. So these were the things I calculated, and then I jumped in. Zong was a brilliant launchpad for me. The work pressure, the professionalism, it was really good, and I learned a lot. Again, I got an opportunity to apply for a post in VGSP, that was for reporting, and that's how I got into this successful domain. I'm with Jazz now. The dream I saw in 2013 completed in 2017, just in 4 years. So I acted in a way to minimize the consequences. I cannot deny my failure. I cannot deny that I didn't fail, but the right thing was to minimize the consequences. Now, how? How did I do that? It's easy to say, but really difficult to do. Number one thing, you need to work on your emotional intelligence levels as well. Now, this is something which many of you will not agree with me, that why do we need to be emotionally intelligent? Because in my first failure, I also learned that I was not emotionally stable to accept that much changes at a rapid pace. It's called fast moving consumer goods. So you have to be fast in decision making. You have to be fast in thinking. You have to be fast in every way of the life, because it's sort of a 24/7 responsibility. You are responsible for the revenues of the company. So emotionally, you must be stable, because you will be talking to a lot of people on a daily basis.
You may meet greeting people, you will meet angry customers, and sometimes, yes, you will meet abusive customers as well. So you must be emotionally intelligent to handle that thing, because you are carrying a certain responsibility on your shoulders, a brand name to present. You cannot go abusive, and you cannot go at all in any way to hurt the sentiments of your customer. So number one thing was that. Skill. I enhanced my skills. Today, I can present wonderful PowerPoints. Alhamdulillah, my first achievement in this regard is that I have produced a few user guides for Jazz users for the products on which I'm working internally. They are now available for the whole Jazz to read. They were conceptualized and they were like brought into the PowerPoint by a team. Yes, I work in a team, but I'm glad that I'm working in the right direction. Communication is my domain, talking is my domain, and coaching is my domain. And I was able, with the help of my peers and colleagues, to produce a piece of guidelines which is equally respected by all the members. So, skill set. If I weren't that much skillful in the basic tools, I would never be able to grab an opportunity. There will be a lot of opportunities in my life where I will be able to acquire more. So this was the second thing. So first thing, be emotionally stable. Second thing, scale up yourself. Number 3, which I told you at first, do the qualitative and quantitative research yourself. Choose the best which suits you the best. Let me tell you one more thing about failure. It is unique, like your fingerprints and your DNA. If you put me and Sheikh Saab in a situation, so one will succeed and the other may fail, or both of us may fail. But we cannot conclude that certain things happen, that's why they fail. His story will always be different. What is affecting him may not affect me. So it's a unique experience for everyone. Last but not the least, the basic thing, how you can overcome failure and how you can proceed in life with confidence. It's the fear of failure that kills you. It's not the failure that kills you, right? We all have emotional failures as well, and they are very personal, and I will never tell anyone to share them with people. But again, you need to be emotionally intelligent to save your relationships, to save your office. In this regard, you can read Emotional Intelligence by Daniel Goleman. It's a wonderful piece of research on emotional intelligence, or you can listen to his speeches on YouTube as well for a short, if you need some quick tip on emotional intelligence, right? So equip yourself. Prepare yourself for the fight you're going to fight, okay? Prepare yourself for all the wandering opportunities. There were times when I couldn't find a single job for myself in Blue Area. I used to pick up this much pile of CVs when I completed my graduation. Sheikh Saab knows Islamabad and he knows how large, how huge the Blue Area is. And I used to put my resume on every desk. Please, sir, hire me. Please, sir, hire me. Please, sir, hire me. And nobody ever even called me back. What I learned from this mistake, that I am not communicating my point in the right way. Maybe I'm doing hard work. Maybe I'm approaching everyone, but I'm not knocking at the right opportunity. It doesn't matter how many doors I've knocked. Nobody called me. Then I changed my strategy. I told them that I'm necessary for their job. I have the skill set. I have the stamina to run in the market. I have the stamina to sit and listen to my client for hours. Now, that's what got me the sales job at the first place. And in sales job, I learned negotiation that bring me more opportunities. So you see, scale up and cash in. So reduce your fear of failure. कहते हैं ना, सांप जहरीला नहीं भी होता, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि कुछ सांप जहरीले नहीं होते, लोग उनके खौफ से मर जाते हैं. सो फेलियर को आप सांप कह लें, आप इसको पॉजिटिव ले लें. यस, देखें तो सही कि क्या वो does it have enough poison to kill you? No, you are not that weak. You are not that weak. A simple failure should not and must not kill your persistence. It should not kill your willpower. So reduce the fear. Nothing is going to happen. ये एक हकीकत है, जिस तरह कोविड एक हकीकत है. आप प्रिकॉशंस लें, probability उसकी कम कर सकते हैं. जिस तरह हम हाथ धो रहे हैं,
ہم ماسک پہن رہے ہیں. There is no guarantee that if we will do these things, we will not get COVID. Yet again, the researchers and the experts are telling us that by taking these precautions, by taking these steps, you will minimize the probability of infection. So the same goes with the failure. You will go in the market, the weather is not good, we couldn't connect on time. It was not Sheikh Saab's failure, but it was the failure of that driver who was not running it on the time. So you can face everything. Sheikh Saab, what he did in this time of panic, he informed all the key stakeholders. He instantly called me, and I appreciate that. And you don't need to be apologetic about it, because you informed me well on time, 30 minutes before the presentation. So that is what we need. Take the responsibility. Lead from the front. Okay, you don't need to get panic about it. It will happen. It is reality. Plus, success. Yes, success is something which we all need. Some of us need it through our parents, right? ابا جی اتنے پیسے کما دے ہو تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے, رائٹ. کچھ لوگ جاتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو تھکاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنے زور بازو پہ کماتے ہیں. اس میں سب طرح کے لوگ ہیں, امیر لوگ بھی ہیں جو اتنی محنت ڈپکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, وہ اپنے زور بازو پہ کھانا چاہتے ہیں. whatsoever are their motives, they want to succeed. Success is the celebration of failure. Trust me, جس دن آپ فیلئر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہی آپ کی بیسیکلی سکسیس کی سیلیبریشن کا سنگ بنیاد ثابت ہوتی ہے. Learn to know where you went wrong. اگر آپ رانگ نہیں گئے تو دیکھیں کون سی سرکمسٹانسز میں کون سی چیزیں ٹریگر ہوئیں جنہوں نے آپ کو خدا نخواستہ ایک فیلئر کی طرف لے گئے وہ چیزیں. اب there will be controllable things and there will be non-controllable things. میں نے ایک اور چیز جو دیکھی ہے نیو جو ہمارے پاس لاٹس آ رہی ہیں, لائک بلیمنگ. جی میری غلطی نہیں تھی, وہ جی فلانی جگہ ہو گیا. یہ ہم میں بھی تھا, ہو سکتا ہے ہم سے پہلے والوں میں نے ان سے اتنا کام نہیں کیا. Start taking responsibility. When I was sitting on the interview table for a major company, Jazz, they asked me one simple question. Saqib, if during the process you fail, this whole process you explained, if you fail, if you couldn't deliver on time, and if you couldn't deliver the products on the right place, who would you blame? I said that, sir, I will do stakeholder analysis, blah, blah, blah. The director straightforwardly told me, Saqib, I need a person who can take responsibility for that. Will you take responsibility for that? And I said, yes. Until date, we are maintaining that promise. Yes, take that responsibility, learn from it, equip yourself, be emotionally intelligent towards it. You don't need to be triggered by everything that is happening around. لوگ تو فوراً سے triggered ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا. Know your triggers. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کریں, اپنا سینہ جو ہے وہ چوڑا کریں. ایموشنل انٹیلیجنس ایک بہت بڑی ڈومین ہے. انشاءاللہ پھر شیخ صاحب ہمیں کبھی دعوت دیں گے تو ضرور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. سو یہ جو 4-5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ میں اسٹارٹر کے طور پہ دے سکتا ہوں. میں شیخ صاحب اگر یہاں پہ انشاءاللہ نالج شیئرنگ میں آئیں گے تو ماشاءاللہ شیخ صاحب اتنے لرنڈ ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ آپ کو اس ٹاپک پہ مور دین شیور کہ 6-7 دن تک نان اسٹاپ کانٹینٹ دیتے رہیں گے. بٹ یس, یہ ان کا ایکسپیرینس بولتا ہے, اور اتنی ڈوزیج وہ آپ کو دے رہے ہیں جتنی ڈوزیج آپ انیشیلی کھا سکتے ہیں. صحیح ہے. سو اف یو نیڈ ٹپس, if you have certain situation, contact Sheikh Saab. He is your mentor for this on this platform. وہ آپ کے لیے ریسورس بھی مینیج کریں گے, and we are thankful for that. شیخ صاحب کہ آپ اتنی بڑی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. That is purely FOC and for the betterment of society. I appreciate and I admire his work in this regard. So yes, talk to your elders. شیخ صاحب ہمارے بڑے ہیں. میری ان کے ساتھ جو فریکوینسی سیٹ ہوئی اسی بات پہ ہوئی کہ وہ ہمارے بڑے ہیں. انہوں نے ایک سرٹن رول میں ماشاءاللہ ہائر ایجوکیشن میں وہ گئے اور ڈائریکٹر رول پہ گئے, and I know how much pressure is there on the shoulders of a decision maker. وہ شخص جو رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا, جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, جو ویل اکوپڈ نہیں ہے, جس کو پروسیسز کا پتہ نہیں ہے, جس کو ویلیوز کا پتہ نہیں ہے, وہ میری طرح 3 مہینے میں بھاگ کے آ جائے گا. صحیح ہے. سو فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے. اگر میں اس وقت نہ سیکھتا اور ایک سٹبرن ایٹیٹیوڈ رکھ لیتا کہ جی میرے نصیب خراب ہیں, وہ جی کمپنی ماڑی تھی. نو, thousands of people are working for that same company. Yes, I respect that company till this date. سو اپنے آپ کو مت کوسیں, جائیں, سیکھیں, اینڈ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ آپ کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں. آپ کو مزید گائیڈنس چاہیے, میں نے آپ کو بتا دیا, شیخ صاحب از دا پرسن
इनके घर की घंटी की जो है ना वो बटन आप तोड़ दें. Yes sir, guide us in this regard. इंटरेस्टिंग. ये एक चीज़ जो इस डायलॉग में मैं देख रहा हूँ साकिब, आई अज्यूम कि आपकी जो एज है वो 25 से 30 साल होगी. दैट इज माय अजम्पशन. मे बी 35 होगी. सर मैं सॉरी 32 टू बी एग्जैक्ट. मैं 32 हूँ टू बी एग्जैक्ट. ओके, आई वाज ऑलमोस्ट देयर. लेकिन जो बातें आप कर रहे हो, खुशी हो रही है सुन के कि यू आर टॉकिंग लाइक अ 60 ईयर ओल्ड. मतलब नॉट टू थैंक बी यू सो मच. ऑफेंसिव बट द काइंड ऑफ नॉट एक्सपीरियंस ऑफेंसिव. दैट यू टॉकिंग अबाउट, तो थैंक यू. वो कहाँ से आया? मैं जानना चाहूँगा, मैं भूल गया. पढ़े कहाँ से हो? वेयर डिड सर यू मैंने कंप्लीट ग्रेजुएशन? कॉमसेट्स से मैंने ग्रेजुएशन की. ओके, उससे पहले? और उससे पहले मैंने सर मैं आपको सारी बता देता हूँ. मैंने G62 के उर्दू मीडियम स्कूल में अपना प्राइमरी स्कूल पास किया, और उसके बाद इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 इंग्लिश मीडियम स्कूल था. मेरे लिए भी बड़ी अचीवमेंट थी, अल्लाह का शुक्र है मैं पास हो गया उसमें. अदरवाइज वो भी एक फेलियर होता. तो मैं गया और 6 से लेके टिल FSC मैंने इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 से पढ़ा. और उसके बाद मैं अपना जो मैंने B.Com किया वो हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में ही कॉलेज है, H8 में उसका कैंपस है, वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी की सनत के साथ. फिर मुझे कॉमसेट्स में एडमिशन मिला, और वहाँ से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया मार्केटिंग में. और उसके बाद जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया कि इट वाज in sales for 3 years, then 4 years procurement, and then now I've been in reporting as well for 1 year with the VGSP. When VGSP decided to leave the country and hand over the processes to Jazz, तो उस दौरान मुझे ये डिजिटल एनेबलमेंट की एक विंडो नजर आई जो मेरे इंटरेस्ट को, मेरे स्किल सेट को मैच करती थी. तो उसके बाद मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ. अच्छा, शुरू से ही आप मल्टीनेशनल्स के साथ, जब से कॉमसेट से ग्रेजुएट किया तो मल्टीनेशनल्स ही के साथ रहे आप? नो, पहले 3 साल मैंने एक लोकल पार्टनर के साथ किए जो कि डेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं. ठीक है, आप इसके अलावा HP के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था. मैं सॉर्ट ऑफ समझ लें कि एक ऐसा बंदा था जो बड़े ऑर्डर के लिए बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था. फ्रीलांसिंग सेल्समैन टाइप ऑफ आप कह लें कि आई वाज वर्किंग विद वन फ्लैगशिप जो बेसिकली दैट कंपनी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर. उनके सेट माशाल्लाह उन्होंने कमा लिया और उन्होंने रैप अप कर लिया. आजकल जो बड़े नाम हैं इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी सेलर्स के हवाले से, उनमें मेगा प्लस भी आता है, उनमें जाफर ब्रदर्स भी आता है, उनमें हायर्स भी आता है, हायर्स की भी जो है सोल्यूशन. तो जब एंड कंप्यूटर मार्केटिंग कंपनी का नाम भी मैंने बड़ा सुना मार्केट में जब मैं था. सो ये बिग जाइंट्स हैं और ये एंट्री लेवल टैलेंट को लेते हैं, इनको काम सिखाते हैं. ये इनका सबसे बड़ी खिदमत है कि बेशक उनका मनी फैक्टर थोड़ा कम है या कुछ है, वो आपको काम सिखा देते हैं. बेसिक प्रोसेसेस आपको आ जाते हैं. Straight from university, if you will get a director's post even, मैं आपको लिख के देता हूँ, you won't be able to do that. So ये थोड़ा सा मार्केट में ग्राउंड जीरो लेवल पे प्रिपरेशन जरूरी है. Even if you want to be an entrepreneur, please don't waste your money. अगर आपने कोई प्रोसेसेस की नॉलेज आपके पास नहीं है, you may be young, save your energy for the later stages, but get through the process first. किसी के अंडर काम करके सीख लें, ईगो मार दें. When you follow order ना, तो ये कमिटमेंट लेके जाएं. ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें हैं, इंशाल्लाह इन पर हम जरूर बात करेंगे. डोंट गेट ऑफेंडेड बाय योर बॉस. बेचारा वो भी किसी को जवाब दे रहा है ना. अगर आप पे सख्ती कर रहा है तो जाहिर है उस बेचारे पे सख्ती हुई होगी. अगर नहीं भी हुई तो उसने टारगेट अचीव करना है. वो कभी सख्त होगा, कभी हम इन चीज़ों से मैं घबरा जाता था. ये भी मेरा फेलियर है. मैंने भी इनिशियली कल्चर्स के साथ मिक्स होने में मुझे भी टाइम लगता था. Then I started realizing, और ये जो अपनी यूथ की खिदमत के लिए मैं निकला, इसीलिए निकला हूँ कि जिस पेन के थ्रू मैं गुजरा और मुझसे ज़्यादा टाइम लगा एक सर्टेन मकाम तक पहुँचने में, शायद मेरी एक बात सुन के कोई उस पर अमल कर ले और शायद उसका टाइम बच जाए और वो मकाम तक जल्दी पहुँच जाए. सो ये भी एक हमारा मकसद था. सो I've been in Islamabad, learned from Islamabad and still living in Islamabad. Every inch an Islamite. माशाल्लाह, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आपने बहुत यंग एज में, आई थिंक आपके मेंटोर्स अच्छे रहे. एक तो मार्केट सिखाती है आपको बेसिकली. Exactly sir, exactly. Self is a very good mentor और very brutal and very harsh mentor. और जितना जल्दी मार्केट में, जैसे कहते हैं ना, मार खा के धक्के खा के इंसान सीख ले यंग एज में, फिर आगे कामयाब होता है. Wonderful. It was a pleasure talking to you. Same here. We spent 20 plus minutes here. Yeah. कोई पार्टिंग मैसेज लोगों के लिए before we close this today's program? यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन सर, मैं यही चाह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि 2 मिनट और दे दें. Sure. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सक्सेस आती है
یہ میں آپ کو آج اس پلیٹ فارم پہ سمجھ لیں سگنیچر میں لکھ کے یہ بات آپ کو دے رہا ہوں نا, یہ ہم کہتے ہیں لکھ کے دینا. سکسیس آتی ہے اپنے مائنڈ فلٹرز کو چینج کرنے سے. آپ نے نیگیٹو فلٹرز انسٹال کر دیے, آپ کے ٹریگرز اگر ڈھیلے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریگرڈ ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, اگر آپ مطلب پروپیگنڈا میں جلدی آ جاتے ہیں, نو, فلٹرز چینج کریں, تحقیق سے بات کریں, فیکٹ کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, میں نارملی اپنی ٹاکس میں ریلیجن کو نہیں لاتا, لیکن میں یہاں پہ ایک حوالہ ضرور دیتا ہوں کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ پہلے خوب تحقیق کر لو. اس کا خلاصہ یہ ہے, پہلے خوب تحقیق کر لو کوئی بات پھیلانے سے پہلے, یہ نہ تم اپنی لا علمی میں کسی کو نقصان دے دو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ حقوق العباد میں ڈنڈی ماریں گے, کسی کا نقصان کریں گے؟ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں, میں تو شاید میں بھی, گارنٹی نہیں ہے, میں بھی شاید حقوق اللہ پہ کمپرومائز کر جاؤں, حقوق العباد پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ میرے اللہ نے ہمیں صاف بتا دیا. دیکھ لیں آپ, یہ ہم کر رہے ہیں پروپیگنڈا میں, چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہے, چاہے وہ پرسنالٹیز کے اگینسٹ ہے, پالیٹکس میں ہے, دین میں ہے, کسی بھی جگہ میں. ریڈ, گیٹ دا فیکٹ اسٹریٹ, present with confidence, because you're not talking a lie, you have a fact, you have a school of thought standing behind you. آپ ارسطو کی بات کرتے ہیں سب چپ ہو جاتے ہیں, کیوں؟ ارسطو is a school of thought, he is not one person. Yeah, he is not one person. ٹھیک ہے, تو جب آپ آئیں گے پھر اپنے اپوننٹ کو بھی پڑھیں, سینہ چوڑا کریں, یہ شعور ہے, سینہ چوڑا کریں, برداشت پیدا کریں. آپ کا اپوننٹ جو بات کر رہا ہے وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے. آپ کی خدا نہ خواستہ ذرا سی بدتمیزی اس اسکول آف تھاٹ کے خلاف بات ہے, یہ غلط بات ہے. ان لوگوں نے ریسرچ کی نا, ایسی تو نہیں کوئی انھے واج سے ہم کہتے ہیں کہ کسی کی فالوورشپ شروع ہو جاتے ہیں, نہیں, دیر از اے ورک. تب آپ اس ورک کو بائی کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی ورکنگ کی ہوتی ہے. سینہ چوڑا کریں, برداشت سیکھیں, چھوٹی موٹی غلطیاں جانے دیں, سیلیبریٹ کریں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو, اینڈ ہیو پازیٹیو فلٹرز. یہاں سے جو تھاٹ ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے باڈی میں جائے گی نا, وہ فزیکلی بھی شو ہوگی. ڈپریس ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں تو صحت آ جاتی ہے. Please change your filters. This is my message for today. Start thinking positive. It's not that difficult. Amazing. I'm really impressed by your talk. I'm Thank you so really much, sir. impressed. It was a Thank you so pleasure much, sir. having you today. I'm ایک available anytime for this platform, sir. ایک اور کامنٹ آیا, یہ بھی میں پوسٹ کر دوں. It Thank you says, so much for this more wonderful comment. inspiring young people like you. Yeah. Thank you Keep so doing much. the good work. Saqib, Thank you, sir. it was a Thank you so much. pleasure having you on our program. Take very good care of yourself. Be Thank good. you. Continue to do the good that you're doing. Right? Thank you so much. Pleasure is all Zindabad. mine. Take care of yourself. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.